હવે મારી એક સલાહ છે કે ફેક્ટરીનો ઓનર તરીકે કે મને પોતે જાત અનુભવ થયો તો જે કોઈ પણ આ પ્લાન્ટ ખરીદવા માંગતું હોય તો તે વ્યક્તિ એકવાર કંપનીની મુલાકાત લઈ. કંપની એટલે કે શ્રી રામ રેફ્રિજરેશન સિદ્ધપુરમાં આવી છે. હાર્દિકભાઈની મુલાકાત લો, ચેતનભાઈની મુલાકાત લો, પછી ત્યાં જ પ્લાન્ટ બને છે તો તેમની જોડે ડિસ્કસ કરો એટલે તમને પણ ખ્યાલ આવશે. હવે ઇન્ડિયાનો સૌથી મોટો પ્લાન છે, મેં લીધો છે આ, તો વાંધો નથી. એમ 3-4-5 લાખ રૂપિયા વધારે ખર્ચ થાય તો વાંધો નથી, પણ સક્સેસફુલ છે પ્લાન. 24 કલાકમાં લાદી તૈયાર કરી દે છે આ ફેક્ટરી. એટલે મેન્ટેનન્સમાં કોઈ જાતનું નથી. એકવાર તમે વિઝિટ લો એટલે તમને ખબર પડશે. તો ચેતનભાઈ, એમ તો મારે તો 1 વર્ષ પ્લાનનો થયો અને કોઈ મેન્ટેનન્સ નથી, બરાબર છે. પણ બીજી પણ ફેક્ટરીઓમાં આવું કંઈક મેન્ટેનન્સ વગરનું હોય છે કે પછી કેમ છે એમ? सर जी इसमें क्या है, ऑल इंडिया में हमारे प्लांट लगे हुए हैं. ये मशीनरी है, कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन 100 में से 10% ही कभी प्रॉब्लम आता है. कोई भी प्रॉब्लम आता है, कस्टमर का फ़ोन आता है या मैसेज आता है कि ये प्रॉब्लम हुआ है, तो तुरंत ही हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हम वहाँ हमारी टीम को भेजते हैं और उनका जो भी प्रॉब्लम होता है हम वो सॉर्ट आउट करते हैं. અને મેં પણ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછું તેના આન્સર તમારા મળતા છે, એટલું તો જોયું. हाँ जी. અને તે વખતે પણ પેનલમાં સ્વિચ બગડી ગઈ હતી. 48 કલાકમાં એ લોકો કંપનીવાળા મોકલી દે છે, ઓનલાઈન મોકલી દે છે, થ્રુ મોકલી દે. એટલા માટે જ કહીએ છીએ કે અમારી સર્વિસ ફર્સ્ટ નંબરમાં છે. બાકી બીજી તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં મળે. કોમ્પ્રેસરથી માંડીને કશું કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ખાલી માઇનર પ્રોબ્લેમ થોડું ઘણું હોય તો એ લોકો ઇનડાયરેક્ટલી પણ અમને કહી દે એટલે રિપેર થઈ જાય છે. બાકી બીજું તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી આવતી. सर अब मैं आपको एक હા, क्वेश्चन करता हूँ. आपका कूलिंग टावर कहाँ पे है? दिख नहीं रहा. કુલિંગ ટાવર છે ને મેં છેલ્લા માળ પર, મતલબમાં ટેરેસ પર મૂક્યું છે. અને મારા પર જગ્યાનો અભાવ હતો, એના કારણે પછી હાર્દિકભાઈને પૂછ્યું તો એમણે કીધું કે કંઈ વાંધો નહીં, તમે ઉપર મૂકી શકો એમ. अच्छा, आपको जगह का थोड़ा प्रॉब्लम था, इश्यू था, बराबर है. ઘર બનેલું હતું अच्छा, અને इसीलिए आपने સેટલમેન્ટ કરવાનું હતું. हाँ हाँ. એટલે પછી મારી આ જગ્યા પણ નાની છે, પણ એડજસ્ટમેન્ટ થઈ ગયું. ખાલી 10 ફૂટનો એરિયો છે ઉપર નીચેનો, નીચેથી ઉપર સુધીનો. એટલે પછી 3-4 ફૂટ જેવું ખોદકામ કરાવ્યું અને આ ટેન્ક અંદર મૂકી છે. ને તેની પછાડી આ કોમ્પ્રેસર છે. કોમ્પ્રેસર 2 છે. 5 ટનનો મારો પ્લાન છે. यानी टोटल जगह यानी टोटल स्पेस है 30 बाय 15 बाय 14, बराबर है. उसमें आपका पूरा प्लांट लग गया है. हाँ. और कूलिंग टावर आपने छत के ऊपर लगाया है जगह के अभाव के कारण. પાઇપનો ખર્ચો થોડો ઘણો થાય પણ અત્યારે સેફ છે. और ये आपने जो टैंक के अंदर जो नमक डाला है वो आप कहाँ से लाए थे सर? આ શ્રીરામ રેફ્રિજરેશનમાંથી જ છે. अच्छा, वो हमारे पास से ही लिया था. હાર્દિકભાઈને ઓર્ડર કર્યો હતો. अच्छा, हमारे पास से ही लिया था. હા, તમારી પાસેથી જ મંગાવ્યું. नमक में एक बात खास ध्यान रखना है, नमक अलग अलग क्वालिटी का आता है. पाउडर टाइप आता है, बड़ा आता है, छोटा आता है. अपना जो शक्कर टाइप का जो नमक आता है वही यूज करते हैं. और नमक का ग्रेविटी अपना 1200 रहना चाहिए. 1200 से कम ग्रेविटी रहेगा तो बर्फ़ जमने में थोड़ा बहुत दिक्कत रहता है. इसीलिए ग्रेविटी का थोड़ा ध्यान रखने का. ग्रेविटी मापने का भी ग्रेविटी मीटर आता है. नमक का जो ग्रेविटी होता है उसको मापने का ग्रेविटी मीटर आता है, वो भी हमारी कंपनी देता है. उससे आपको चेक करते रहने का कि ग्रेविटी कम है या ज़्यादा है. ग्रेविटी कम रहता है तो क्या करने का, थोड़ा बहुत नमक डाल देने का. મહિનામાં 1-2 વાર ખાલી ચેક કરવાનું આવે છે. એ લોકો મીટર આપે છે કંપનીવાળા. તો 1200થી નીચે થોડું ઘણું ઉતર્યું હોય તો 40 કિલો જેવું મીઠું નાખી દઈએ આપણે તો પાછું ગ્રેવિટી એડજસ્ટમેન્ટ થઈ જાય. आपने पावर कनेक्शन कितना लिया था 5 टन के आइस प्लांट में? 5 ટનનો મારા આઈસ પ્લાન્ટમાં છે ને 30 HP નો પાવર લીધો હતો. 30 HP का पावर कनेक्शन लिया था. લીધો હતો. કનેક્શન 30 HP નું હતું. ये आपका बर्फ़ का कॉस्टिंग क्या पड़ता है બરફનું और क्या भाव में आप बेचते हो? બરફનું કોસ્ટિંગ પર કેજી 1 રૂપિયો અને સેલિંગનું ધ્યાન પર લઈએ ને તો 3 રૂપિયા કિલો હોલસેલમાં વેચતો છું મેં અને 5 રૂપિયા કિલો
રિટેલમાં જતું છે अच्छा यानी 100 केजी का जो सिल्ली आप 400 में बेचते हो, 500 में बेचते हो, 300 अलग अलग 500 में। हाँ अलग अलग रेट में बेचते हो। एक बात ध्यान रखने का, सब जगह पे बर्फ़ का रेट अलग अलग रहता है। कहीं पे एक सिल्ली 100 केजी का सिल्ली का 800 रुपया भी चलता है, 1000 रुपया भी चलता है। सब जगह पे बर्फ़ का सिल्ली अलग अलग भाव में बिकता है। चलो अब मैं आपको प्लांट का पूरा जानकारी देता हूँ। एक पैनल बोर्ड है, यहाँ से पूरा ऑपरेटिंग होता है पूरा प्लांट का। एक कंप्रेसर है, इसके अंदर ही कंप्रेसर लगा हुआ है, और ये एजिटेटर है जो नमक वाला पानी को घुमाने का काम करता है। ये बॉक्स के अंदर वाल लगा हुआ है, ये सेफ्टी के लिए बॉक्स लगाया है, किसी का पैर ना लग जाए, वाल को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए ये सेफ्टी के लिए बॉक्स लगाया है। बॉक्स के अंदर ही वाल लगा हुआ है। एक क्रेन है जो बर्फ़ निकालने के लिए काम करते हैं। ये पैनल, मशीन, टैंक, क्रेन, कुंडी, कॉपर की पाइप है, प्लम्बिंग, ये सारी चीज़ें हमारी कंपनी देती है और प्लांट पूरा इंस्टॉल करके भी देती है। आपको सिर्फ पानी, लाइट, नमक और जगह देना है, ये 4 चीज़ें ही आपको देने का है। पूरा सामग्री, दूसरा सामान जो भी है, सारी चीज़ें हैं वो हमारी कंपनी आपको देगी। किसी को भी ये प्लांट का विजिट करना चाहते हो, कोई भी ये प्लांट का विजिट करना चाहता है तो इधर आ सकता है। आराम से 5 टन 100 केजी का ब्लॉक है, ये विजिट कर सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, और नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट पे आप कॉल कर सकते हो। कॉल करने का समय सुबह 9 से शाम को 6 बजे का है। धन्यवाद।